Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Short and Typing with Vikas. The Hindu editorial dictation heading is ending encryption. देखो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल पॉपुलर मैसेजिंग एप्स विल एनक्रोच इनटू यूजर प्राइवेसी। व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी न्यूज़ चली हुई है। ओके, तो उसमें क्या बोला गया है, ऑथर ने बोला है कि अगर हमारा व्हाट्सएप मैसेज है, मैसेज हम कोई भी जैसे ग्रुप में डालते हैं, तो एक मैसेज फॉरवर्ड किया, एक उसने 10 मेंबर के साथ फॉरवर्ड किया, फिर उसने आगे से 10 के साथ कर दिया, 20 के साथ कर दिया, फिर 16 के साथ कर दिया, यानी कि हज़ारों में ही संख्या बन जाएगी उसकी। तो ऑथर ये बोल रहा है कि हम फिर उसको कैसे ट्रेस करेंगे जो जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है इस एसएमएस का। ओके, ये आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है, हम डिस्कस करेंगे 100 वर्ड पर मिनट। सो बी रेडी, स्टार्ट। Barely a day before the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 came into force, WhatsApp moved the Delhi High Court against the rules, specifically the one that mandates that a significant social media intermediary providing services primarily in the mature of messaging shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resource as may be required by a judicial order. Given the specification that a significant social media intermediary is one with more than 50 lakh registered users, WhatsApp's messenger service would clearly be affected. WhatsApp's contention is that for compliance and traceability, it would have to break its end-to-end encryption service that allows messages to be read only by the sender and the receiver. Its argument is that the encryption feature allows the privacy protections and breaking it would mean a violation of privacy. The question to be asked is whether the traceability guidelines by breaking encryption are vital to law enforcement in cases of harmful content. A release by the Ministry of Electronics and IT has said that the traceability measure will be used by law enforcement as the last reason and will come by only in specific situations such as for the purposes of prevention, detention, investigation, prosecution, or punishment of an offense related to the sovereignty and integrity of India, or child sexual abuse material punishable with imprisonment. The assertion suggests that this requirement is in line with the Puttaswamy judgment that clarified that any restriction to the right of privacy must be necessary, proportionate, and include safeguards against abuse. But the government, as the law stand now, can already seek access to encrypted data under Section 69 bracket में 3 bracket close of the IT Act and Rules 17 and 13 of the 2009 surveillance rules that require intermediaries to assist with decryption when they have the technical ability to do so and when law enforcement has no other alternative. Besides, it can still seek encrypted data, metadata, and digital trails from intermediaries such as WhatsApp. The trouble with enforcing traceability is that without safeguards such as having any independent or judicial oversight, government agencies could seek any user's identity
on vague grounds, and this could compromise the anonymity of whistleblowers and journalists, sources who can claim to be acting in the public interest. WhatsApp contention that requiring messaging app to trace chats is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every single message sent, and fundamentally undermines right to privacy, is therefore not hyperbole. If anything, the government needs to revisit its position on traceability commitments of intermediaries and instead revise the IT Act 2000 in line with existing global best practices, besides legislating the long pending data protection bill. Full stop. दिस इज द आर्टिकल ऑफ द डे। स्टूडेंट्स इस आर्टिकल की आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसको आप मैच कीजिए। और आज का आपका वर्ड ऑफ द डे है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेज एप्स विल एनक्रोच इनटू यूजर प्राइवेसी। ओके, इस आर्टिकल का आप ये बताओगे मुझे मीनिंग क्या होता है, इस आर्टिकल को किस बारे में है ये। ओके, और इसकी टोन क्या है, जैसे मेन पॉइंट है इसकी टोन क्या होती है। अगर आपको डिक्टेशन अच्छे लगते हैं, डिक्टेशन को लाइक कमेंट। डोंट फॉरगेट चैनल, subscribe our channel. Have a good day.